Hello, everyone. Great. Grateful to all of you who joined us for this program. And I'd like to welcome all of you to the webinar on role of youth and volunteer organization in disaster risk prevention. This is an initiative. This is an initiative by the Square India to engage the youth in DRR conversation for a resilient India. In our endeavors to build resilience, the younger generation not only needs to participate, but lead. This is the whole purpose of organizing this event. Any disaster requires a quick response to save lives, manage the damage, and avoid any secondary disaster. The affected community is always the first responder. In most instances, this takes place voluntary, outside any organized setting. Volunteers from the community play a vital role in the immediate response to any disaster. National Disaster Response Forces, State Disaster Response Forces, and other organized services, including police, fire services, take time to reach to the disaster sites. In the meantime, volunteer groups provide initial rescue and relief services and act as a link between the affected communities and institutions arriving at the scene, thus strengthening the response by the government actors. Volunteers also work as a force multiplier. Welcome to all of you. I'm Natish Barole from Square India, and this webinar is an opportunity for all of us to learn from the experience of national youth-based organizations to how to mobilize young people and engage them in DRR and resilience building. Once again, I invite you all. So first of all, let me invite to Mr. O.P. Bhatia, Secretary, Indian Red Cross Society, Mandi, Himachal Pradesh. He has been actively working with Red Cross for the last 34 years. He is also the convener of the intelligence group in Himachal Pradesh. Also, last year, he presented Himachal Pradesh in the national managing body of the Red Cross India. He will be discussing about strategies the Red Cross adopted to train young people in disaster management, and also share some of the examples in how Red Cross Mandi leading the way for volunteer engagement. Recording in progress. Over to you, sir. Sir, आवाज आ रही है? यहाँ देखो. Sir. Sir? Bhatia, sir, please. Sir, Namaskar. Yes, sir. सर आप कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम आ रही है, आप शेयर करना चाहते हैं? Okay, sir, I will call you and check with you what's the problem. Let's meanwhile let me invite Ms. Abha Mishra, the head of officer Odisha at the UNDP India. She has a postgraduate in development anthropology with over 30 years of action-based research and implementation experience in community development projects, with specialized skill in project management, design, review, and technical support in programs such as disaster risk reduction,
livelihood, women's empowerment, and tribal studies. Ms. Abha will be speaking on UNV's role during any disaster risk management projects, mobilize and manage community volunteers. Over to you, ma'am. Ma'am, yes. Good evening, Nitish, and good evening to all the participants. Yes, ma'am, you are audible. Okay, sorry for I just got a little late in one of the meetings, so I'm still in the car, but I think I should reach in another 5 minutes. Can you all hear me? Yes, ma'am. Okay. Now, when we talk about role of the youth, and specifically with disaster management, the journey of disaster management in India itself. I'm sure most of you remember the 1999 super cyclone and the devastation it caused across Orissa. We were young, development workers across the state of Orissa, which came together and started working. And I can tell you, I mean, as a victim of that super cyclone also, I can very well mention here that, when you look at what youth immediately as the wind speeds goes down and the rains are little lesser, all the youth of the village, specifically of my village, which is in Puri district, got together to, assess what is the situation in the village. The thing which they find is that the roads are blocked. Now, nothing can reach the village because all the roads are blocked. So the first thing they do is start running around hunting for equipments which could help in clearing the road. That is means cutting the trees, because it's a coastal district, so you had a lot of trees on the roads, and then you had also a lot of debris which from the broken houses. So in a way, the youth, and specifically the male youth, young boys, came together and cleared the road so that the resources which the government may send or may not send, but at least to keep the way clear. That was the first thing. Then what did the women or the young girls do? They got together to ensure that whatever was available was made available to everyone who is working for their community. So, while mothers, fathers start looking at the property and start keeping the house together, these young people who are a little freer go across to support all the community members. And that is how I also started, and then became a UNV. Then also joined a group of NGOs to support them in data management, route planning with 190 NGOs. And then subsequently became a young volunteer in the UNDP. As a United Nations volunteers are basically paid through different agencies. And what was our role? Again, one of the roles was to motivate young people to come together so that the food material which had to go, the clothes, the household material which has to go, can be packed properly. And that is where, at that particular point of time, young people came together in the Kalinga Stadium, packing, unpacking, unloading, loading together. So youths play, that's
That's the whole side where a disaster has sucked, and then we do it. And I'm sure many of us here today in this room, in the virtual room, understand that. So what do the next work is? If once the relief phase is over, you start getting into the whole rehabilitation. And young people who are just out of the colleges, just out of, or who are also there in the villages, understand what is the need of the village, how can they support construction of temporary shelters, construction, taking up certain other livelihood is something which they also do. And that is also where the youth can utilize their. I'll give you one example in Kerala, because 99% of people are educated and understand, and most of them are computer savvy also. They came together and immediately created so many small apps and websites which reduce the burden of the government to understand where what is lacking. It was so easy for the government to ship in the materials to that particular village, to that particular GP. Along with that, they also ensured that immediately data was collected on the different types of vehicles, and the vehicle was put onto the app so that movement which vehicle can be easily deputed anywhere was done. That is all youth doing it. So a role of youth in the preparedness is done, in the rehabilitation sector is done. Now when we come into the next phase of recovery, your knowledge, your expertise, what you have learned in the colleges becomes also very, very important. It is not, even as youth who is already into a job can volunteer. Volunteering across the world has become, I'll give you one example. I went to University of Edinburgh in 1994, and I was there for a month, and I stayed in a place which was near to a park, and every day I used to cross and go to the university. And one day I found there were a lot of women, old. The first day I saw old women on a crossway, and I asked the lady, I said, ma'am, do you want any help? She said, no, 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 I am here to help. She must be about 75, 76. And give me a second, Nitish. I'll just rush into my room. That's okay, ma'am. That's okay. We will wait. Or Thank you so much. So like I was mentioning, and what was this young lady of 75 years old doing? She was actually standing on the crossway. All she had to do was switch on a button when the traffic lights would, become as stop. All the vehicles had to stop. And young toddlers who were going to school on the other side would just move down that lane. So she, in a way, was contributing as a volunteer. If an old person can do it, why can't our youth do it? And that's where your role comes in. So that is a part of, small things can be done. And when we come into the whole mitigation, all the youth are learners.
And you learn, you change faster than us, the old people. So you can, in your spaces, wherever you are working, you have to take the first step and say, am I being risk resilient? Am I looking at the various hazards and the events which are happening and trying to do the best, reduce the risk? We are talking about plastics, banning plastics and other things. If you look at any disaster sites today, and specifically when there is water related, you would find the whole plastic and all the garbage coming in. What as youth we have done, we could take out, ensure that the garbages in our own vicinity is clean, or put in such a place that if there is a hazard, as a flooding or a landslide, it does not happen. So small things within your communities, you can make a lot of difference. And I think youths have done excellently during the COVID situation. They played exemplary role. If you look at it, starting from, supporting elderlies, supporting the sick people, trying to organize blood and oxygen, trying to provide food materials. And one of the biggest things which the youth of this country has done is rise up to the challenge put in by the pandemic and come up with innovative ideas which would help the citizen of the people. All of you have that role to play. Youth can work, provide support in the education of this education of the country, and it is not just young people, the children, but also elderly, because your digital literacy is very poor, be it women centric or men centric or even the elderly. So please, you can think about it. Second is that you can innovate. You can become as local as possible. Try and find out local things which can help support at that particular time. I like the one good idea which came out of the Kerala floods was also, I'm sure all of you must know the Kerala saris. They were damaged, the looms were damaged. Nobody knew what to do with them. Somebody thought of, let me make that small dolls. It became its slogan, it became an iconic piece for everyone. And I'm sure it must be some young mind which has done. So youth are full of ideas. They always remember, it does not matter what people say. We all will feel a little sad for 1 or 2 minutes. Then we can bounce back. Be as resilient as the bamboo. The wind blows it, it goes down, then it again comes back. Let's try to be like that. And youth engagement in some of the areas is very, very high. I still remember in my village, what used to happen was, before the whole panchayati system came in being and the ponds and other things being handed over to the panchayat, it was the youth of the village who will during summers clean up the whole thing, because the water would be less. They will clean up the whole thing, fish day in, day out in there, and make merry, because nobody will stop them from eating the fish which they have taken out. But today, because the panchayat own it, the panchayat cleans it, the panchayat auctions the pond for fish keeping, so nobody can take the fish out of it on a free. So these are changes which are happening. Within the changes, the youth can do a hell of a lot. I can tell you, I personally have worked at least
18 to 22 hours during the disaster periods. Irrespective, people could, by the time we got the mobile phones and other things in our hand, I got a mobile phone only in 2001. So at any given point of time, we can, and remember, if you are able to help a person during their need, you will be always blessed by them and remembered. With happiness, everybody stays together. But if we stand by during our unhappiness, that's the biggest thing. And that's a challenge, because sometimes we, as a youth, you also will not know what to say to the person concerned. But it's very easy. And you have a role in every sphere, in every phase of disaster management. Please remember, prevention, if you do not use too much of plastic, you reduce clogging. If you, during a disaster, you could use help, provide relief and everything which you can. You can help in raising funds. There are many youth who actually during this COVID time, I know in others also, took up, entertaining people, because people were so depressed. They didn't have anywhere to go. So they worked with it. So you can be a part and parcel. Psychological, counseling is one of the things you all can do. Help, work, play. So in rehabilitation, you can do support in any of the activities which you like. Just 3 days back, we had a blood donation camp, and maximum were youth. You are contributing, you contribute a hell of a lot. You can also do it online. In UNV specifically, if I would like to mention here, is the United Nations volunteers. They take both online and offline volunteers. Please do go and visit the website. That's a very good opportunity for you all to learn. You can all go to different, if you are willing to go out of the country also, you get chances within the country also. Then you have other voluntary organizations also, like the VSO, the IFRC. Within the Government of India has two, of course, the NSS and the NYKS. It's very important for you all to come together and, work together, because nation building in a large way also rests on the new ideas which you all generate. Thank you so much. Thank you, ma'am. As you mentioned, during the Kerala flood, I was there, and the dolls you were mentioning is the Chekuti dolls, and those dolls became the hope and the symbol of the hope and resilience during the Kerala flood. And I'm sure, like as you mentioned, a lot of young people, young girls are involved in the creation of that thing. It's also another way of resource mobilization at that time. So, and also some of the ideas you mentioned, especially the innovation at the local level, and how you can contribute at different level in disaster cycle. It's very important. Thank you so much. I hope you can stay with us to at the end give some answer to the question of the participants. Thank you. So now moving on, as I was mentioning earlier, I like to invite Mr. O.P. Bhatia, Secretary, Indian Red Cross Society, Mandi, Himachal Pradesh. Over to you, sir. Sir, unmute कर लीजिए, sir, please. नमस्कार, मैं ओपी भाटिया, सेक्रेटरी रेड क्रॉस मंडी, हिमाचल प्रदेश। सबसे पहले तो मैं आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं कि आप सब ने मुझे सौभाग्य दिया कि मैं आपके बीच में अपने विचार रख सकूं। जैसा कि रेड क्रॉस सोसाइटी पूरे विश्व में
अलग अलग कार्य कर रही है, लेकिन जो हम अपने मंडी जिला में कार्य कर रहे हैं, मैं उसके ऊपर विशेष रूप से चर्चा करना चाहूंगा कि जो हमारे मंडी जिला के युवाओं ने हमारे रेड क्रॉस के साथ और जिला प्रशासन के साथ जुड़ करके अपनी भागीदारी सुनिश्चित की, वो एक बहुत ही सराहनीय प्रयास रहा है। हमने ये देखा है कि हिमाचल प्रदेश जो है पहाड़ी क्षेत्र है, बाढ़, कुदरती आपदा, बादल फटना, जंगलों में आग लगना, ये हमारा मुख्य रूप से ये हमारी घटनाएं चलती रहती हैं। जिला प्रशासन, हिमाचल प्रदेश सरकार व अन्य तंत्र के पास हमारी जो मेन पावर थी वो इतनी सक्षम नहीं हो पाती कि वो हर ग्रामीण स्तर पर जाकर के किसी भी प्रकार की समस्याओं का निदान कर सके। गत वर्ष हमने ये निर्णय लिया कि जिला के युवाओं को ग्रामीण स्तर पर ही जोड़ा जाए, जिसके लिए हमें हमारी जो इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ रेड क्रॉस एंड रेड क्रिसेंट जिनेवा से भी काफी सहयोग प्राप्त हुआ। तो हमने उन युवाओं को जोड़ा। सबसे पहले हमने हमारी जो 569 पंचायत हैं, उन पंचायत से हमने एक एक मास्टर ट्रेनर को तैयार किया। युवाओं को फर्स्ट एड, होम नर्सिंग, फायर फाइटिंग और जो हमारी और अन्य कुदरती आपदाएं हैं उनके प्रति जागरूक किया। उनके लिए विशेष प्रकार के प्रशिक्षण शिविरों का आयोजन किया। प्रशिक्षण शिविरों के आयोजन के उपरांत प्रत्येक हमारे जो मास्टर ट्रेनर थे उनके द्वारा हर पंचायत में जाकर के 20 से 25 लोगों को प्रशिक्षण दिया गया। आज जिला मंडी में हमारे प्रत्येक पंचायत स्तर पर 20 से 25 स्वयंसेवक कार्य कर रहे हैं। वो इस समय हमारे पास जिला रेड क्रॉस सोसाइटी मंडी के पास 10,665 लोग ऐसे हैं जो युवा हैं। वो रेड क्रॉस की हर प्रकार की गतिविधियों के साथ जुड़े हुए हैं, चाहे वो ग्रामीण स्तर पर कोई आगजनी की घटना हो, कुदरती आपदा हो या किसी भी प्रकार की अन्य कोई घटना हो, वो समय समय पर तुरंत जा करके प्रशासन से या सरकार के तंत्र से पहुंचने से पहले ही वो मदद का प्रयास करते हैं। तो जिस प्रकार हमने एक युवाओं को जोड़ने का प्रयास किया, हमने किया, तो हमने इस ग्रुप का नाम रखा सोशल इमरजेंसी रिस्पांस वॉलंटियर्स। हमारे जितने भी वॉलंटियर्स हैं मैक्सिमम 18 से 45 वर्ष के बीच में हैं। वो अपने अपने क्षेत्र में निःशुल्क काम कर रहे हैं। कोई सरकारी नौकरी पेशे वाला नहीं है, खेती-बाड़ी करते हैं, लेकिन उनके ग्रामीण स्तर पर या पंचायत स्तर पर कोई किसी प्रकार की कोई कुदरती आपदा आती है तो वे लोग पंचायत स्तर पर जाकर के अपनी भागीदारी सुनिश्चित करते हैं। जैसा कि कोविड-19 में देखने को मिला, लॉकडाउन लग गया, हमारे लोगों का आना जाना बंद हो गया, राशन की दुकानें बंद हो गई, तो हमने हर सब डिवीजन लेवल पे, हमारे 12 सब डिवीजन हैं, 12 सब डिवीजन लेवल पे टास्क फोर्स गठित की। टास्क फोर्स में हमारे 50 युवाओं का एक ग्रुप बनाया। युवाओं द्वारा सबसे पहले जो हमारी स्थानीय राशन की गाड़ियां आती थी, उन गाड़ियों से राशन उतार करके संबंधित सरकारी स्टोर में रखा जाता था। सरकारी स्टोर में रखने के उपरांत 9 बजे से लेकर के 12 बजे तक वो लोगों में राशन वितरित करते थे। और उसके उपरांत जैसे हमारे कुछ एक जो हमारे मजदूर लोग थे या क्षेत्र में हमारे दूसरे बंधु थे जो जिला मुख्यालय तक नहीं पहुंच पाते थे, तो उन तक हमने विशेष वाहनों के माध्यम से उन जरूरतमंद लोगों को, उन युवाओं के माध्यम से राशन पहुंचाया। आज हिमाचल प्रदेश में ही एक पूरे हमारा जो सर्व ग्रुप है, सोशल इमरजेंसी रिस्पांस ग्रुप, वॉलंटियर्स ग्रुप, वो एक मिसाल है जो समय समय पर अपने इस प्रकार के कार्य करते रहे हैं। नितेश जी, मैं विशेष रूप से आपको बताना चाहूंगा कि जिस प्रकार कोविड-19 की घटना शुरू हुई, फर्स्ट लॉकडाउन हुआ, हिमाचल प्रदेश में पहली मौत मंडी जिला में ही हुई। मंडी जिला में हमारे जो श्री लाल बहादुर शास्त्री गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज हैं, वो हमारे 5 जिला के रोगियों को यहाँ पर उपचाराधीन करते थे। और जब रोगी की मृत्यु हो गई तो उसके परिजन तक उसके सामने नहीं आए और अंतिम में ये निर्णय मुश्किल हो गया कि इसका दाह संस्कार कौन करेगा। हमारे सोशल इमरजेंसी रिस्पांस वॉलंटियर्स ने प्रॉपर अपनी पीपी किट के साथ जाकर के रेड क्रॉस का शव वाहन लेकर के जब हमारे उस पहले कोविड-19 के पॉजिटिव केस की दाह संस्कार किया,
पूरे हिंदू रीति रिवाज के साथ दाह संस्कार किया। उसके उपरांत पूरे दोनों फेज में हमारे जो सर वॉलंटियर्स थे उन्होंने 183 लोगों का दाह संस्कार हमारे मंडी जिला मुख्यालय में ही किया, जिसके लिए लकड़ी हमें लोगों द्वारा दान से प्राप्त होती रही और वॉलंटियर हमारे निःशुल्क तौर पर अपनी सेवाएं प्रदान करते रहे। इसके साथ ही ये देखा गया था कि हमारा जैसे हिमाचल प्रदेश मंडी जिला का काफी दुर्गम क्षेत्र है, लॉकडाउन में बसेस या ट्रांसपोर्टेशन सारी बंद थी। कुछ एक रोगी हमारे ऐसे थे जो लाइफ सेविंग ड्रग्स के बिना अपना ज्यादा कार्यकाल पूरा नहीं कर पा रहे थे। जैसे जैसे हमने सर्व के माध्यम से हर पंचायत पे, हर जिला में, पूरे जिला में इस प्रकार का सर्वेक्षण किया तो हमने पाया कि इन लोगों को अगर दवाइयां नहीं मिल पाएगी तो ये जो है अपनी लाइफ सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। हमारे सर्व वॉलंटियर्स ने जो मेडिसिन उनको लोकली सरकारी हॉस्पिटल में मिली वो वहां से अरेंज कराई। उसके उपरांत जो जिला मुख्यालय से मिली वो हमारे जिला मुख्यालय से टीम यहाँ से लेकर के गई और जो दवाइयाँ यहाँ उपलब्ध नहीं थी उसके लिए हमने रोगी वाहन की व्यवस्थाएं लगाई और पीजीआई चंडीगढ़ या जहाँ भी उनकी दवाइयाँ उपलब्ध थी वहाँ से प्रदान कर करके उन रोगियों के घर घर तक पहुँचाई और इसमें परिणाम स्वरूप 1472 लोगों के दवाई घर घर हमने ये मेडिसिन दोनों लॉकडाउन में पहुँचाई है। तो युवाओं से मेरा यही निवेदन है कि युवा जितना हमारी इस प्रकार की गतिविधियों में आगे बढ़ेंगे, जैसे मैम ने पहले बताया, तो हमारे युवाओं की भागीदारी अगर सुनिश्चित होगी तो हमारे देश का पुण्य ही होगा। दूसरा मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि गत वर्ष, पिछली वर्ष हमारे सोशल इमरजेंसी रिस्पांस वॉलंटियर्स ने आपस में डिस्कस किया और निर्णय लिया कि हम प्रत्येक पंचायत स्तर पर 100 पौधे रोपेंगे, क्योंकि जो हमारा पर्यावरण है दूषित हो रहा है, पेड़ कटान हो रहे हैं, काफी प्रोजेक्ट्स लग रहे हैं, उसी की वजह से हमारा जो लैंडस्लाइड का रेशो है वो काफी बढ़ गया है। तो पिछले साल 2021 बरसात में हमने 24,600 विभिन्न प्रकार के पौधे रोपे थे, जबकि इस वर्ष हमने अभी तक, जबकि अभियान निरंतर जारी है, 84,926 पौधे हमने सर्व वॉलंटियर्स के माध्यम से और पीआरआईज के माध्यम से पूरे जिला मंडी में लगाए गए हैं। वो हमने एक इनसे निवेदन किया है कि जो हमारा वॉलंटियर्स, जो हमारा पीआरआईज इन पौधों को लगाएगा वो आगामी 3 वर्ष तक इनका संरक्षण भी स्वयं करेंगे। इसके साथ ही युवाओं की को इस प्रकार की गतिविधियों में जोड़ने के लिए हमने रेड क्रॉस के साथ जूनियर रेड क्रॉस और युवा रेड क्रॉस का गठन किया। जूनियर रेड क्रॉस जो हमारे 9th से लेकर के 10th क्लास तक के युवा जिसमें सम्मिलित हैं, वह युवा रेड क्रॉस में हमारे 10+1 से लेकर के 30 वर्ष तक के जो युवा वो हमने इनको सम्मिलित किया है। और इस समय हमारे मंडी जिला में 1273 ऐसे शैक्षणिक संस्थान हैं, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं, जहाँ पे ये हमारे ग्रुप्स रजिस्टर्ड हैं। और खुशी की मैं बात बता दूं आपको कि इस वर्ष हमारे स्कूल के बच्चों ने खुद निर्णय लिया, खुद उन्होंने आयुर्वेद विभाग से संपर्क किया, जिला प्रशासन से संपर्क किया और 94 एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में आयुष वाटिकाओं का गठन किया, आयुष वाटिकाएं स्थापित की, जहां पे जितने भी वो मेडिसिनल प्लांट हैं वो स्कूल कैंपस में ही पूरे लगाए गए हैं। तो अगली वर्ष भी हम ये जारी रखेंगे और इस प्रकार की आयुष वाटिका जो हमारी है, जिसमें हर्बल गार्डन्स हमारे रहेंगे, मेडिसिनल प्लांट्स हैं, तो इसको भी हम आगे को जारी रखेंगे। इस प्रकार हमने रेड क्रॉस के साथ साथ युवाओं को जोड़ने का प्रयास किया है। वो भविष्य में भी आप सब लोगों के मार्गदर्शन और सहयोग से जारी रखेंगे। वो मेरा युवाओं से पुनः निवेदन है कि वो चाहे जिस भी क्षेत्र से मैं कार्य कर रहे हों, जिस भी जिला से हों, जिस भी प्रदेश से हों, वो अपने देश हित के लिए जो हमारी विभिन्न प्रकार की योजनाएं हैं उनमें अपनी भागीदारी सुनिश्चित करें, ताकि हम हर प्रकार की सुविधा के लिए सरकारी तंत्र पर ही निर्भर न रहें। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सर, और आपका बहुत आभार कि आपने जो अपना जो ग्राउंड से जुड़ा अनुभव हम सबके साथ बांटा और जिस योजना सर्व सोशल इमरजेंसी रिस्पांस वॉलंटियर के माध्यम से आप हर ग्राम पंचायत में
वॉलंटियर्स और युवाओं को ट्रेन करके डिजास्टर्स के दौरान काम करते हैं। बहुत ही सराहनीय मॉडल आपने हिमाचल प्रदेश के मंडी में विकसित किया है, और मुझे आशा है कि ये मॉडल बहुत सारी जगह पर आपके अनुभवों के आधार पर जरूर इसको लागू अलग अलग जगह पर किया जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद सर। शुक्रिया। Thank you. So now I'd like to invite Professor Amrita, Coordinator, Center of Excellence in Disaster Management at Development Management Institute, Bihar. Professor Amrita is an academic with industrial experience and has worked with corporates and government institutions for more than 7 years. Currently actively involved in teaching, research, consultancy, and capacity building activities at the DMI. She was a Prime Minister's Rural Development Fellow under the Ministry of Rural Development in Bihar and was involved in many government programs and schemes. Currently, she is leading the initiative of the Center of Excellence in Disaster Management at the DMI. Today, she will be talking about ways in which universities can work with the students and the community to educate and train them on disaster management. Over to you, Professor. Thank you so much, Nitish. I hope I'm audible. Yes, ma'am. Okay, thank you. First of all, I'm extremely thankful to Sphere India and to you in particular for inviting me for this webinar, which is talking about a very, very pertinent topic, engaging youth in the domain of disaster risk reduction and management. Because the demographic dividend, which India and the state that I belong to, Bihar, has been claiming about, it can only be harnessed, the potential can only be harnessed if we are really engaging the youth in a very meaningful way. So with that, I have a very small presentation. So can I share that? Yes, ma'am. Just a minute. So I hope my slides are visible. Yes, ma'am. Okay, so this is a very small presentation which I've just prepared primarily to keep it as a background for my speech about how universities can engage students in a meaningful way, ultimately for the community, benefiting the community that we talk about. So I'll just quickly talk about the plan of presentation that I have for today. So first of all, I'll talk about the framework for engagement, how really the educational institutions can engage with the students to ultimately benefit the community. And then I'll also talk about some of the recent developments, which are like a watershed when we talk about the education in the domain of disaster management, then possible engagement opportunities which are there. And towards the end, just a concluding remark. So moving forward with the framework of engagement, and this is something we all are familiar with, the disaster management cycle, that it talks about mitigation, preparedness, response, recover, and rebuild. So why am I talking about the disaster management cycle? So it's very important to acknowledge and accept that there is the possibility of maximum engagement of these students, so that we can ultimately talk about which members also talking about, the servers also talking about making resilient communities. So I guess we all would agree, though response, recover, and rebuild, there is an opportunity for engagement, but preparedness, mitigation and preparedness, in that also preparedness is one stage where if we work a lot, it can ultimately help build the resilient communities, which we all aim for. Recently, the Prime Minister has also given the 10-point agenda in which for disaster risk reduction, in which he emphasized that we aim for building safe and resilient India by the year 2030. So this is one framework which has been given by the United Nations Disaster Risk Reduction Organization in the year 2019. So this framework basically talks about how we can really move from a destructive phase, where especially in the era of climate change, we are experiencing and witnessing more and more of disasters.
if I talk about the state of Bihar, there are disasters like flood, which is again a recurring phenomenon in Bihar. And it's actually a multi-disaster prone state. And this year, while all other states are experiencing, a good amount of rainfall, Bihar, though facing floods, but is not really, getting enough rainfall. So the state as such is having, a drought-like situation in most of the districts, but still, contrary to that, there are districts where we have flood-like situation. So that's why this framework is very important. How can we really move from a destructive phase to a regenerative phase? And especially this is important in terms of engaging the youth. There was a recent survey which talked about that millennials and the generation G, they are more and more environment conscious. The survey said that the millennial and the generation G are so much environment conscious that they are even willing to pay 10% more for a sustainable brand. So this applies here also, because if we talk about disaster risk reduction and management, and we'll be talk about action oriented activities, which would ultimately benefit the communities, there is a possibility of engaging the youth in a meaningful way as really the change agents. And this can only happen if we talk about risk information, and for that education is very, very important. We in education domain, we say that information is knowledge and knowledge is power. That applies everywhere. So, if we talk about the building resilience for the communities, there we talk about three kind of capacities. First is the absorptive capacity, which is more about the coping capacity that can be with the help of information that is provided, then how that the communities with their own resources or the possible resources that would be available to them can absorb or cope with the disaster that is going to happen. Then adaptive capacity, how can they adapt themselves so that the disaster doesn't have much impact on the community. And the third thing, which is very, very important when we talk about disaster risk reduction, that is the transformative capacity. And of course, when we talk about the transformative capacity, the transaction cost, obviously the resources that would be utilized for the transformative capacity would definitely be on the higher side. But ultimately, we aim for the transformative capacity so that, we aim for resilience. So this is a framework that, somewhere we as in the Center of Excellence are also engaging with. Ultimately, education is very, very important and is the foremost thing. Unless and until somebody is educated, they can't be aware of the disaster risk. Like recently, we are doing a survey in the state of Bihar for lightning. Lightning has emerged another major disaster in the states like Bihar, UP, Jharkhand. These states, are experiencing more of lightning strikes, and the number of deaths has really gone up because of lightning. So we were doing this survey, and I remember I was in this district called Saran. We were, interacting with the families of the deceased, and there was this youth, who had lost his father. And, when I started talking about the mobile application, he immediately came forward with his mobile smartphone and, started asking that, how can I install that? So why am I sharing this? Because the current generation is more towards action. They are not just going to listen and sit back, but they are really into action mode. So like this youth immediately came forward, asked me to install the mobile app in his mobile, and then how to operate it. And they're really smart enough. Like there were also youth who were using the social media like YouTube. They are using it in a big way for education and the information purposes. Like there was this another youth, we asked that, do you really know if lightning strike is there? How do you really position yourself? In which position you should sit, and how can you really, minimize the risk? So he immediately shared that, on YouTube, he has seen this video where they talk about that you can, nail down, and you just put your head on hands on the head and cover your ears, and kneel down and do not lie on the ground, but just sit like that. So I was like really amazed. That these mediums are also very important, especially in engaging with the youth, so that right information can be available to them in the right time. So obviously, when we talk about
the framework for engagement with the students, especially for resilient communities, the foremost thing is education. And then enabling is very important. Like, just providing the information or the knowledge or educating is not enough unless and until they are enabled with the right kind of skill set, so that they can tackle those disaster situation or the situation they are going to be engaged with. So education is important, enablement is important, and the third and foremost is the empowerment, which is not only the educational institutions can facilitate, but this can only happen under the ecosystem approach. Like I was reading somewhere, there is another research which was saying that there is a lot of dependency on government institution. I remember Mr. O.P. Mishra was also saying. So it's not only government institution which can work, and the sole reliance on government institution is not going to help. So the government institution at the best can provide or facilitate that enabling ecosystem, which will ultimately, of course, the youth, the community, they also have to participate, so that we can move toward resilience. So that's why education, enablement, and empowerment, all three are important and would go a long way building resilient communities. So some of the recent developments which has happened in the domain of education and disaster management. Foremost is the Prime Minister's 10-point agenda for disaster risk reduction, which he gave during the Asia Ministerial Conference on Disaster Risk Reduction in the November 2016. So, there is one point that is primarily emphasized for educational institution is point number 6, which talk about develop a network of universities to work on disaster related issues. And this has been really a breakthrough in terms of facilitating and promoting the education on disaster management in the country as such. I remember I have done 2 rounds of recruitment so far for the Center of Excellence in Disaster Management, right from the beginning of 2021. But every time, my personal experience, when we were looking for a person who has really studied disaster management, there was really a challenge, because most of the people who had applied for our recruitment process, they were mostly having this degree from IGNU, or even there were some issues that also. So then it made me personally realize that still there is a need to promote disaster education in a big way in the country. And after the October 2017, I remember the first information in this regard was received, wherein it was mentioned that there should be course on disaster management mandatorily in undergraduate education, primarily in term semester 4. But now, another breakthrough that now it has been made mandatory that the universities, the educational institutions, to promote disaster risk reduction and management education. And the good news is that in the month of February 2022, even the model curriculum has been developed by the National Institute of Disaster Management, and that has been shared with all the universities and the institutions. Like, the letter was received to the vice chancellors of the universities and the principals of the college and the institution. So that is another very, very important landmark event that has happened, because the model curriculum is available, which can go a big way in promoting the education in the domain of disaster risk reduction and management. Then I've also captured the points 7, 8, and 9, because I think these are also very important for youth and for promoting the education in disaster risk reduction, not just for the youth, but for the community as such. Like, utilize the opportunities provided by social media and mobilize technologies for disaster risk reduction. Because, if we talk about the millennials, Generation G, and the next generation that is coming, they are more and more, these tech savvy, and they are more or more on these social media platforms. Like, YouTube is being used for education in a big way. So nowadays, kids, they all know how to operate a smartphone and gadgets. So this would be also very important in facilitating the information, education, and communication about disaster risk reduction and management. Then the 8th point that the Prime Minister gave talks about build on local capacity.
and initiative to enhance disaster risk reduction. And the ninth point, which is about make use of every opportunity to learn from disasters. To achieve that, there should be a studies that should be conducted, post-disaster studies, or like we in the center do, like we are right now doing a study for lightning, another one we are doing for drowning. Like surprisingly, these kids, mostly in the age group of 13 to 18 years, they know swimming, and somewhere they're also aware of the risk of floods, but still the drowning deaths are another major thing which is alarming for the state of the art. So that is also another study we are doing. So educational institutions can do a lot of work in that direction. So that's why I've captured these points from the Prime Minister's 10-point agenda on disaster risk reduction. Talking about the opportunities which are there. Like I mentioned, in 2017, it was made mandatory that there should be at least one course on disaster management, disaster risk reduction in the curriculum. Then like Feb 2022, now the model curriculum is available. So like we in the center also thinking of going ahead with the education in the domain of disaster risk reduction and management. So besides classroom learning, I guess most of us would relate to many a times, like, we talk about every student has a different learning style. Not everybody is one who can read and learn, assimilate, but there are more students who can really do something and they learn while doing something. So, the capstone projects, which in DMI we call it experiential learning, can go a long way in promoting the education on disaster risk reduction and management, where the students can be like in our case, we send the students for 3 kinds of experiential learning with the development sector organizations, where they really like the first segment is called development immersion, where they stay in the village for the six weeks, and they are there with the community and understand how the community really live their day-to-day life, how they carry out their livelihood activities, and each and everything being with the community, which is also called as kind of action research. So action research capstone projects could be much more beneficial in promoting the education in the disaster risk reduction. Another thing is competitions. I would give a small marketing example. All of us would remember again, when National Egg Promotion Council was promoting eggs in India, they gave this slogan called Sunday ho ya Monday, Rose Khao Ande. So each and every one of us still remember that. So these competitions, like Government of India is facilitating that in a big way. So these competitions can also facilitate the education in a big way, especially engaging in a meaningful way. Then the third point that we also do here in development management institutes, one party is engaging through the development sector organization. The other party is engaging through the local government institutions, like the Panchayati Raj institutions, Gram Panchayat, or the urban local bodies like municipal council, municipal corporations. So all that engagement can also be facilitated like development sector organizations. The students can also do a capstone project or experiential learning thing, or being with the community through the local government institutions, which are very, very critical in disaster risk management if we talk about. Because if we talk about the local, the first unit of the local of the democracy in India, it is the Panchayati Raj institution, that is Gram Panchayat. So the community-based partnership through these local government institutions can also promote the disaster risk reduction and management education in a big way for the youth. Then the fourth thing, that is research, which of course the educational institutions can do that in a big way and have been doing it. And this can also not just be a social science research or just for academic purposes, but this can also feed in the evidence for the policy work that happens in the country or the state. And in turn, that evidence generation can also facilitate the policy advocacy, formulating the right policies. We always talk about that, in public policy, still the approach is more of top to bottom, while
we talk about community participation. Unless and until the community participation is happening, the policy formulation still have issues. Like if the policy is formulated in a right way, the implementation has issues or something like that. So to have right kind of policies being formulated, implemented in the right way, it's very important to do research and generate the evidence for the policy work. Then the last and foremost is, of course, the capacity building, which the educational institutions are doing in a big way, not for the government functionaries, but also for the community. Here in the Center of Excellence also, we are working on a platform which would be available in the public domain, and that can provide all kinds of IC information. Like many times we have experienced that there's so many institutions, like we have a state authorities, we have a department, we have other institutions who are working in the domain of disaster management, but really they are not able to converge or collaborate. So we are facilitating that, which can happen in other places also, to provide that convergence platform, and all the information related to IC that is available would be available on a single platform, and it would be in the public domain. To conclude, now, of course, we all know that education can go a long way in disaster preparedness and ultimately to build safe and resilient India by 2030. Just one statement by the end. I remember there was a survey done in the year 2019 where it was found that in undergraduate education in India, there are approx more than 29 million students enrolled in undergraduate studies, and this is about the attendance whose attendance were captured was more than 29 million, and the total enrollment that was there, that was more than 37 million. While the Indian Armed Forces, we know they also work in the domain of disaster response primarily. The strength of Indian Armed Forces active personnel in the country is around 1.4 million only. So if we really educate, enable and empower the youth, which in an undergraduate itself the number is more than 29 million, this can go a long way in really reaching on to the community and ultimately talking about resilient India. So with that note, I conclude. Thank you so much. Thank you, Professor Amrita, and really appreciate how you connected the PM 10-point agenda of point 6, how development of the network of universities can support others points, as well as the building of the capacities of community and the young people. Also, as your session, we can conclude like education will enable us to build a resilient community. So thank you very much. Thank you. Moving on, I would like to invite Mr. Rajkumar Verma, Youth Officer, Ministry of Youth Affairs and Sports, Regional Directorate of NSS Bhopal. He's a former assistant professor in commerce and recipient of the Indira Gandhi NSS Award by the Government of India. As a youth representative, he was a part of the Youth Exchange Delegation Program in China. As we know, NSS has been working with youth volunteers for many decades. Today, he will be speaking about what has been the NSS methods and strategy to work with young people and how they are engaging young people in disaster management. Over to you, Mr. Rajkumar. नमस्कार सभी डिग्निटीज को, और धन्यवाद इसके लिए कि एक अच्छी मीटिंग और एक अच्छा वेबिनार जो हम आज जिस समय हमको ये आवश्यकता है कि हम आपदा से कैसे निपटें या आपदा से हम कैसे सुरक्षित रह सकें, इन चीज़ों को लेकर आपने एक बढ़िया प्लेटफॉर्म तैयार किया जिसमें सभी विभाग और सभी डिपार्टमेंट्स जो यूथ को लेकर मोटिवेट कर रहे हैं, यूथ को लेकर काम कर रहे हैं. तो फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू कि आपने एक अच्छी अपॉर्चुनिटी दी एक बात रखने के लिए, प्रेस करने के लिए.
बात शुरुआत हम यहाँ से कर रहे हैं कि हमारा आज का विषय है कि आपदा जोखिम न्यूनीकरण में युवा और स्वैच्छिक संगठन की जवाबदारी या भूमिका। हम अपने आप में कितने मेंटल तैयार हैं, इस बात से तैयार होगा कि हमारे आसपास के युवा कितने तैयार होंगे। कुछ छोटी छोटी बातें नितेश जी आपके एनजीओ के माध्यम से और सभी आदरणीय जो आज मुख्य अतिथि या आज के प्रवक्ता के रूप में या वक्ता के रूप में उपस्थित हुए हैं, उनके समक्ष है। राष्ट्रीय सेवा योजना के स्वयंसेवक ग्राम अंचल से लेकर राष्ट्रीय स्तर के शिविरों के माध्यम से आपदा प्रबंधन हो या गांव की सेवा कार्य हो या ग्रामीणों के लिए एक बेहतर नवाचार हो, उन सब में काम कर रहे हैं। जैसे अभी कोविड के दौरान कई चीजें हुई और उन कई चीजों में हमने देखा कि सभी एक युवा वर्ग ने और सभी छोटे छोटे लोगों ने, जो हम सोच नहीं सकते वह लोग सब आए। एक आपदा थी और कहते हैं कि भारत में आपदा का आना जाना लगा रहता है। क्यों? क्योंकि हम पंच तत्व विलीन हैं, पंच तत्व में समाहित हैं, पंच तत्व में रह रहे हैं। चाहे वायु हो, जल हो, अग्नि हो, पहाड़ हो, नदी हो, पर्वत हो, ये आप सभी जानते हैं। इन चीजों से हम घिरे हुए हैं, सराउंडिंग हमारे यही है। तो स्वाभाविक है जब गति तेज होती है किसी चीज की तो उसमें हम लिप्त होते हैं। जैसे प्रोफेसर अमिता जी ने कहा था कि कुछ ऐसे तरीके जो सूचनाओं के माध्यम से सरल हो सकते हैं। कान में आप हाथ लगाइए, जैसे बिजली का कड़कना होता है, बिजली का कभी भी गिर जाना आकस्मिक हो सकता है। तो सही चीज ये नहीं है कि हम उस बिजली से उस व्यक्ति को कैसे बचाएं, सुरक्षा ही बचाओ, उसको पहले सही जानकारी उस तक पहुंचे जिससे वो अपने आप को सुरक्षित रख सके। इसके लिए आपदा प्रबंधक ने कई वीडियो जारी किए थे, उसको लेकर हम अवेयरनेस किए। भाटिया जी ने एक अच्छी चीज कही कि कोविड के दौरान रेड क्रॉस ने मिलकर बॉडीज को एक अग्नि दहन किया, सांस्कृतिक जो भी हमारा हिंदू रीति रिवाज होता है उसके माध्यम से। तो उनको बता दूं, शायद भाटिया जी इस बात को जानेंगे, चंडीगढ़ में एक रेड क्रॉस सोसाइटी और एनएसएस ने मिलकर काम किया, जिसमें अमजद करके एक लड़का था जो एनएसएस पुरस्कार से सम्मानित है, और अमजद की स्टोरी अमिताभ बच्चन जी ने शेयर भी करी थी। तो कई हम लोग ऐसे मिलकर काम कर रहे हैं जो बताने की आवश्यकता नहीं जरूर है, क्योंकि हम दूसरे को प्रेरित कर सकते हैं, इसलिए बता रहे हैं। और स्वैच्छिक बात आती है किसी कार्य करने के लिए तो तब आती है कि हम उसका सामना कैसे कर सकते हैं। हर समय काल में कुछ न कुछ आपदा आती रही है, छोटी हो या बड़ी, उसकी सूचना का प्रेषण कैसे होता रहा है, व्यक्ति युवाओं को ट्रेंड प्रशिक्षु कैसे कर सके, प्रशिक्षण कैसे दे सके, सूचना का सही आदान प्रदान कैसे हो सके, और ग्रामीण अंचलों में आने वाली नदी बाढ़, इन पर कितना काम कर सके। क्यों? क्योंकि आजकल टेक्निकल यूजेस बहुत ज्यादा है, तकनीकी शिक्षा को लेकर भी, तकनीकी सूचना को लेकर भी ज्ञान होना चाहिए। यदि हम सब जानते हैं मैप के माध्यम से, हाई अलर्ट के माध्यम से कि इस जगह भारी बारिश होने वाली है, तो मुझे लगता है कि वो जो समय ड्यूरेशन, टाइम ड्यूरेशन है, उस बीच का फायदा युवाओं को या आपदा प्रबंधन समितियों को या स्वैच्छिक संगठनों को लेना चाहिए। और उसके बीच इन प्रक्रिया को, अपने योजनाओं को इम्पेनल्ड या स्टैब्लिश करनी चाहिए, स्थापित करना चाहिए, जिससे कि हम वहाँ के ग्रामीण अंचल परिवारों को एक सुरक्षा की दृष्टि से निकाल सके और वहाँ हम उनको फायदा दे सके। तब हमारी तकनीकी सूचना का फायदा होगा। तो हम युवा तकनीकी सूचना का कितना फायदा लेना जानते हैं, तकनीकी सूचना का कितना फायदा लेना जानते हैं, ये बड़ी बात हमारे लिए होगी। सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल ट्रेनिंग पार्ट्स में ये भी होना चाहिए। दूसरी चीज कि हम किस परिस्थिति में हम युवाओं को सही प्रशिक्षण दे सके। आज हमारे पास आपदा है, कल हम यदि उनको बताने जा रहे हैं कि ऐसे ट्रेंड होना है, तो इसके लिए हमको प्रिपेयर होना पड़ेगा, पूर्व अनुमान लगाकर पूर्व तैयारी के साथ हमें स्थापित होना पड़ेगा। तकनीकी सूचना की हमारी बात हो चुकी है, जिससे आपदाओं के बीच में से सुरक्षित निकालना और सूचना देना, सुरक्षित सूचना और जागरूक सबसे बड़ी बात होती है। जैसे भूकंप का आना, तो क्या भूकंप के आने में सूचनाएं क्या क्या या सुरक्षित रहने क्या क्या तरीके हैं, उनको हम कितना अवेयर है खुद स्वयं,
और स्वयं के माध्यम से हमारे समाज परिवार के लोगों को हम कितना अवेयर कर रहे हैं। एक लाइव एग्जांपल है, हम बहुत सारी मूवीज, बहुत सारी फिल्मों को देखते हैं, सब परिवार बैठकर देखते हैं, पर उस मूवी का डिस्कशन कोई नहीं करता। उस मूवी के जो मैसेज होते हैं हर व्यक्ति अपने हिसाब से एक्सेप्ट करता है और अज्यूम करता है और उसको इस्टेब्लिश करता है अपने अंदर। कोई अच्छी चीज है, किसी को एक आईएएस बनने का बहुत अच्छा तरीका उसमें समझ में आया तो उसने उसको एक्सेप्ट किया, किसी को स्पोर्ट्स का तरीका आया उसने अपने को एक्सेप्ट किया। तो हर माइंड की कैपेसिटी कैपेबल अलग अलग होता है, तो उसको उस हिसाब से स्टेप बाय स्टेप या उसको बाइफ्रिकेट करके उस व्यक्ति को उस तरीके को समझाकर और लोगों तक जागरूक कैसे किया जाए उस बात को भी जोड़ देना चाहिए। क्योंकि युवाओं का संगठन है और युवाओं के तरह तरह के विभिन्न मानसिक स्तर होते हैं, सूचनाओं का आदान प्रदान, क्योंकि मैसेंजर एंड डिलीवर्ड एंड एक्सेप्टेबल ये अलग अलग स्टेप्स होते हैं। हम कितना उनको समझा पा रहे हैं। बहुत सारे फिजिकल, मैं आपदा में, मान लीजिए कि मुझे आपदा में काम करना अच्छा लगता है, अब मुझे मुझे तैरना नहीं आता, पर आप कह रहे हो कि नहीं आपको तो वहां पे भी, तो ये एक स्किल्स जो होती कौशल, उसको भी इसमें ध्यान रखा जाए। युवाओं के कौशल को कैसे उपयोग किया जाए। राष्ट्रीय सेवा योजना के कई युवा हैं जो तैरकर भी लोगों को बचाते हैं, जो नहीं तैरते वो सड़क दुर्घटना में लोगों को हानि हुई उनको सुरक्षित करके अस्पताल की ओर लेकर जाते हैं। तो वहां पर स्किल्स भी काम आती है। बहुत सारे हमारे इंस्टीट्यूशंस जो स्टडी कर रहे हैं वहाँ डॉक्टर, नर्स, हमारे वॉलेंटियर होते हैं, तो ऐसे लोगों को भी जोड़ा जाए और उनके स्किल्स के हिसाब से उनको उस जगह प्रायिकता दी जाए, प्रोबेबिलिटी दी जाए और उन जगह इस्टेब्लिश किया जाए। जैसे बहुत सारे स्टूडेंट डॉक्टर की पढ़ाई कर रहे हैं, नर्स की पढ़ाई कर रहे हैं, और हमको लगता है कि इनको भी एक अंग से जोड़ा जाए, तो एक पार्ट हो गया हमारे पास। हमको लगता है कि अच्छा तैराकी जो फिजिकल एजुकेशन प्राप्त कर रहा है, एजुकेशन ले रहा, उसको एक मर्ज किया जाए। तो एक ऐसी टीम जो अलग अलग क्षेत्रों से हो उनको एकत्रित करके शिक्षा के क्षेत्र वाले स्टूडेंट्स को लेकर एक टीम तैयार करके एक आपदा प्रबंधन समिति, सुरक्षा समिति, शैक्षिक समिति, शैक्षिक सेवा संस्थान में इस तरीके से प्रयोग करके हम एक बेहतर आपदा प्रबंधन से एक प्रबंधन का प्रयोग कर सकते हैं या एक प्रबंधन बना सकते हैं और हम उस आपदा से निपटने में एक सफलता प्राप्त कर सकते हैं। कई परिवार में राशन, भोजन, इनकी समस्याएं होती हैं, उस समय विशेष ध्यान दिया जाए। कभी कभी आजकल सोशल मीडिया का माध्यम है, फोटोग्राफ्स, इनके चक्कर में बहुत ज्यादा सेवाएं होती हैं, पर सेवाएं प्रॉपर कम होती हैं, फोटोज ज्यादा होती है, तो उनको भी इग्नोर करके, क्योंकि संवेदनशील व्यक्ति संवेदनहीन होते जा रहा है। हम जितनी बातें कर रहे हैं, कथनी और करने की बात करता हूँ, मुझे लगता है कि बाहर के बुजुर्गों की सेवा करने से बेहतर है कि पहले घर के बुजुर्गों की सेवा करें। राष्ट्रीय सेवा योजना का एक गीत है, उसकी पहली पंक्ति है, स्वयं सजे वसुंधरा सवार, उठे समाज के लिए उठे, स्वयं सजे वसुंधरा सवार, और हम सजेंगे तब वसुंधरा संवरेगी। तो पहले खुद को संवारने की बात है, तो खुद को परिपक्व बना के हम समाज को परिपक्व बनाएंगे। जैसे भाटिया जी और अन्य लोगों ने कहा कि युवा का विकास होगा तो राष्ट्र का विकास होगा, युवाओं का निर्माण होगा तो राष्ट्र का निर्माण होगा। तो युवाओं को बेहतर क्रियाशील, युवाओं के स्किल्स के पहचान कर उनको बेहतर प्रशिक्षण देना, ये हमारा पहला ध्येय होना चाहिए। जागरूक करना, सोशल मीडिया के माध्यम से छोटे छोटे मैसेज बनाकर, मैसेंजर तैयार करके या कोड तैयार करके हम लोगों तक पहुंचा सकते हैं कि जब कोई बिजली कड़क रही हो, बारिश हो रही हो, इस दौरान आप स्विच को हाथ ना लगाएं, जैसा कि पूर्व में बताया गया हमारे एक वक्ता ने, और पेड़ के नीचे ना बैठे, खुले आसमान में बारिश हो रही वहां ना बैठे, सारे स्विच होकर ऐसी जगह बैठ जाए। तो वो सुरक्षित संसाधन क्या होंगे, सुरक्षित तरीके क्या होंगे, सुरक्षित होने के ट्रेनिंग या प्रशिक्षण क्या होंगे, तो वो तरीका होता है। सबसे बड़ी बात होती है सेवा भाव में ही सुरक्षा है। यदि हम सेवा के लिए निकले हैं तो निस्वार्थ रूप से निकले हैं सभी लोग। आज हम इतने आज मिलकर बैठे हैं तो एक बिना किसी स्वार्थ के हम आज इस मीटिंग में और इस वेबिनार में हैं, तो निस्वार्थ रूप से सेवा करने के लिए हम तैयार हैं और अपनी अपनी एक जिम्मेदारियां होती है। तो इसमें कुछ बिंदु होंगे जिसमें सूचना, तकनीकी सूचना होगी, प्रशिक्षण होगा जिसमें अलग अलग क्षेत्र में जो स्किल्स, जिनके कौशल हैं, कोई डॉक्टर हो सकता है, कोई तैराकी हो सकता है, कोई बहुत अच्छा आइडियोलॉजी हो सकता है,
कोई बहुत अच्छा मैपिंग हो सकता है, कोई बहुत अच्छा एक लोगों से कम्युनिकेशन करके, डोनेशन इकट्ठा करके जो आपदा से जूझ रहे हैं, आपदा से ग्रसित हैं, उनके लिए मदद हो सकती है, और हम सब कर रहे हैं। तो कुछ इस प्रकार से एक प्लान आउट तैयार करके हम लोगों की मदद कर सकते हैं। क्योंकि हमारा आज का विषय है आपदा जोखिम न्यूनीकरण में युवाओं की और स्वैच्छिक संगठन की भूमिका। तो क्या भूमिका होना चाहिए? राष्ट्रीय सेवा योजना ग्रामीण अंचल से लेकर राष्ट्रीय स्तर पर बड़े बड़े काम कर रहा है, और भाटिया जी ने कहा कि हमने मिलकर पौधारोपण रोपित किया, और सही बात है। आज सबसे ज्यादा आपदा प्रबंधन की जरूरत है, क्योंकि मिट्टी जड़ से निकल रही है। जब तक उसमें पेड़ पौधे नहीं लगेंगे, नहीं रोपे जाएंगे, तो बरसात नहीं होगी, मिट्टी का कटाव नहीं रुकेगा। सबसे बड़ा हनन, आज पेड़ की जड़ों से मिट्टी का कटाव रुकता है, तो मिट्टी जमी हुई रहती है, जिससे जो एक चट्टानों का फिसलना होता है वो कम होता है। पहाड़ों का जो काटना किया जा रहा है, आजकल पहाड़ों को काटा जा रहा है उसकी गलत तरीके से। अभी शायद भाटिया जी इस बात से या प्रोफेसर लोग जो वक्ता हैं आज के सहमत होंगे। पहाड़ की कटिंग इस प्रकार से होती है, पर आजकल लोग इस प्रकार से कर रहे हैं, बहुत जल्दी वो निकल जाता है। नीचे से ना करते हुए कटिंग ऊपर से हो, ताकि एक बेहतर उसका बहाव जब हो, पहाड़ पहाड़ में पानी का रिसाव जब हो, तो वो अचानक से ना गिरे। तो कितनी हम हानि कर रहे हैं। हम छोटी छोटी चीजों को सब जानते हैं, पर उन चीजों को बेहतर तरीके से करने के लिए हमारी भूमिका क्या है? तो हमारे सजेशंस वहां तक पहुंच सके, वन विभाग हो, चाहे जल विभाग हो, जल संसाधन हो, या पर्यावरण मंत्रालय हो, या पर्यावरण विभाग हो, तो कितनी जगह हम हमारी एडवाइस को कट टू कट करके एक प्लान लेआउट करके हम भेज सकते हैं। देखिए, हम हमारे स्तर पर फिजिकल हम बहुत सारी चीजें कर सकते हैं, पर कुछ मैपिंग, कुछ योजनाएं जब सरकार से जारी होती है या एक विभाग से जारी होती है, उस पर अमल सब करते हैं। क्योंकि हमारे इर्द गिर्द हम साफ सफाई सब कर सकते हैं। प्लास्टिक की बात आई थी, वाकई बहुत बड़ा हानिकारक है। आज इंदौर देखिए, मैं जिस स्टेट में हूँ, जिस राज्य में हूँ, इंदौर ने कितना बड़ा इस पर रोक किया है। जो पुराने सामान होते हैं, प्लास्टिक होते हैं, उनका उपयोग करके उनको रोकथाम के। तो कहने का तात्पर्य कि प्लास्टिक जब बारिश में, एक हमारे जो मैडम पहले वक्ता थे, उन्होंने कहा था कि प्लास्टिक बोटल्स, आज जब बारिश होती है, वही बॉटल्स, वही प्लास्टिक पॉलिथीन जब चेम्बरों में रुकती है, ब्लॉकेज बनता है, तो पानी का एक निकासी बंद हो जाती है। जब पानी की निकासी बंद होती है, तो उससे और पानी का एक बढ़ोतरी होती है, जिससे आपदा, पानी की जल आपदा शुरू होती है। तो हम वहां पे भी जरूरी है। तो हमारे लिए हर चीज अधिक मात्रा में करना आपदा होती है। चाहे शरीर के लिए हो, आप देख लीजिए, अधिक खाना भी शरीर को हानि पहुंचाता है। तो हर चीज का अधिक उपयोग करना भी आपदा की ओर संकेत है कि हम कितना कर पा रहे हैं। आज जितने पेड़ कट रहे हैं, क्या हम उतने लगा रहे हैं? क्या हम ऑक्सीजन, जितने हम बात करते हैं एसी की, तो एसी इसलिए उपयोग हो रहा है कि भाई ग्रीनरी कम है, तो ग्रीनरी बढ़ाना हमारा काम है। ये भी एक आपदा है। प्रकाश, गर्मी, तापमान का बढ़ना भी आपदा है। इस बात को समझिए, समझेंगे हम सब, और समझ रहे होंगे कि आपदा तो किसी भी परिवेश में, किसी स्थिति में भी उत्पन्न हो सकती है। आप बैठे हैं, बैठे बैठे आपदा आ सकती है। धरती से जितनी मिट्टी कम हो रही है, उतनी भूकंप की स्थिति बन रही है, क्योंकि जमीन पोली हो रही है, जमीन खाली हो रही है। हम निर्माण तो कर रहे हैं मकानों का, पर क्या हम एक वातावरण का निर्माण कर पा रहे हैं? तो यही हमारी भूमिका है आज के परिवेश में। हम आकाश, जमीन, पर्यावरण, जल, अग्नि, हम इनको कितने सुरक्षित रख पा रहे हैं? हमारे तरीके क्या हैं? जब हम कभी पहाड़ों में घूमने जा रहे हैं, तो हम वहीं पर वेफर्स के पैकेट्स लेकर जा रहे हैं, पानी की बोतल लेकर कैरी नहीं करना चाहते, एक बैग कैरी करना नहीं चाहते। हम कितनी सुंदर प्रकृति को, एक आपदा हमारी तरफ आ रही है, क्योंकि कहीं ना कहीं सोचने की बात है और मंथन करने की बात है। सोचने का सभी सोचते हैं, मंथन करने की बात, मैं इतना बेहतर कह सकता हूँ, ये मेरा अभिमान है। मैं भी अपना बेहतर सजेशन दे सकता हूँ, ये मेरा स्वाभिमान या मेरा स्वभाव है। तो हम सब मिलकर एक बेहतर मंथन करके अमृत जो निकाल पाए, और इसमें जो सूक्ष्म सलाह, सजेशंस, विचार, अभिव्यक्ति, व्यक्तित्व का जो एक मसाला तैयार होगा, वो आज की हमारे मीटिंग का सबसे बड़ा एक सफलतम वेबिनार होगा। तो हमारा भूमिका या हमारे युवाओं की भूमिका अलग अलग क्षेत्र के हिसाब से अलग अलग तय होती है। आज के युवा वायु की गति में काम कर रहे हैं, क्योंकि इनको खाली बैठाना
एक तरीके से इनकी ऊर्जा का हनन करना, ये भी आपदा है। युवाओं को हम आत्मनिर्भर बनाने की बात करें, युवाओं को हम उनकी कैपेसिटी बिल्डिंग की बात आ रही थी, युवाओं को पेशेंस, आज के समय में पेशेंस की बात है, धैर्य, हम कहते हैं ना धैर्य धीरज, हमारे पिताजी कहते हैं, क्योंकि हमें अनुभव है, उनको अनुभव है, हमको नहीं, इसलिए उनको पता है कि अच्छा हम अभी कल परसों की बात है, हम जिस ग्रामीण में रहते हैं वहां की जगह किसी ने जिक्र किया कि अरे यार अब नदी का पानी स्तर बढ़ने वाला, तो एक युवा ने कह दिया अरे नहीं नहीं अभी थोड़ी होगा, और रातों रात वहां की जगह पानी आ गया, किसान की फसल चली गई। तो हमारा फसल भी है जिससे हमारा अन्नदाता आज हमारा पेट भर रहा है, तो उसको भी सुरक्षित करना, उसको भी कैसे मिले। तो बरसात यदि हो रही है तो हमें किसानों को भी अवेयर करना है कि इस सीजन में कौन सी फसल बेहतर होगी। जैसे धान है, पानी में आसानी से रह सकती है, तो जितने नदी किनारे वाले कृषक हैं उन्हें सजेस्ट किया जाए कि ये फसल का उपयोग किया जाए, तो वो उस आपदा से बचे और उनको जो वित्तीय हानि हो रही है उससे बचे। तो कुछ इस प्रकार के मेरे अपने व्यूज और सजेशंस थे, और धन्यवाद आपका, क्योंकि चूंकि मैंने समय सीमा आपकी देखी, क्वेश्चन आवर सेशन भी है आपका, तो बातें तो बहुत सी हो सकती हैं, क्योंकि इतने प्रबुद्ध जन आए हैं, तो मुझे सौभाग्य हुआ कि उनके सामने मेरी बात रखने का, और इतने अच्छे विचारक हैं सभी लोग, हर प्रत्येक व्यक्ति सुनने वाला भी विचारक है, कहने वाला भी विचारक है। तो उन सभी का आभार कि जिन्होंने सुना और जिन्होंने मुझे इतनी अच्छी ज्ञानवर्धक बातों का मंथन मेरे साथ किया। तो थैंक यू नितेश जी एंड टीम एंड सारे स्पीकर्स जिन्होंने एक बेहतर वेबिनार में मेरे साथ सहयोग बन के सुना और मुझे एक अच्छी बातें सुनने का अवसर दिया। धन्यवाद। धन्यवाद राजकुमार सिंह। जरूर आपने जो बात करी मुख्यतः तकनीकी के बारे में और साथ में कौशल विकास के बारे में, और जो कि आपदा के पूर्व किया जाना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। Now I like to invite Mr. Milind Jadhav. He's an assistant deputy controller at the Civil Defense Maharashtra. With more than 22 years of experience in the sector, worked in the 2011 terror attack response, and also responding to many fire and flood rescue operations. Today, he will be sharing his view on this civil defense experience on building a cadre of youth volunteers. Over to you, Milind. सारों को नमस्कार। नितेश, मेरी आवाज आ रही है सर? जी आ रही है। जी सर। जी जी, आपकी आवाज नहीं आ रही है। आपसे एक रिक्वेस्ट है, अगर आपका नेटवर्क वीक है तो आप अपना कैमरा बंद कर दीजिए और ऑडियो। सर, am I audible, सर? जी सर, अब आपकी नितेश आवाज। सर? जी सर, जी सर। जी जी। सर, आज मैं सिविल डिफेंस के बारे में थोड़ा सा पहले तो मैं ब्रीफिंग करूंगा। काफी सा मेरे पहले 4 मान्यवरों का मैंने सर बात सुना,
काफी सारे एक्सपीरियंस पर्सन है सारे। मैं ये सिविल डिफेंस स्टाफ कॉलेज में सर एज ए इंस्ट्रक्टर करके काम करता हूँ। सिविल डिफेंस का सेटअप जो है वो थोड़ा सा मैं ब्रीफ करूंगा। एक्चुअली सर ये सिविल डिफेंस एक ऑर्गेनाइजेशन जो है इंटरनेशनल लेवल का ऑर्गेनाइजेशन। हमारे इंडिया में 1968 में इसका सर यहाँ पे इस ऑर्गेनाइजेशन में एंट्री हुआ। उसके बाद में हमारे महाराष्ट्र की अगर मैं बात करूँ तो हमारे महाराष्ट्र में सर अभी ये 8 जगह में 8 डिस्ट्रिक्ट में हम लोग काम कर रहे हैं। और मुंबई में अगर हम लोग बात करेंगे तो मुंबई में सर हमारे 30,000 वॉलंटियर और ऑफिशियली सर। तो ये सारी चीजें बताने के पीछे का जो एम है ये है कि सर एक्चुअली वॉलंटियर जिसको हम कहते हैं तो हम लोग उसको वॉलंटियर्स में सर कहते हैं, हम उसको वार्डन कहते हैं। और ये जो वार्डन कंसेप्ट है, एक वार्डन को हम लोग इतनी अहमियत देते हैं कि वो हमारे ऑर्गेनाइजेशन का बैकबोन है, हमारे ऑर्गेनाइजेशन का माइंड है। इस तरीके से हम उसको ऑर्गेनाइजेशन में तो जनरली आपको ताज्जुब होगा कि जनरली हम इससे बोलते हैं कि आज भी हमारे जो सेमिनार का जो सब्जेक्ट है वो है यूथ लोगों को या तो जो वॉलंटियर लोगों को आपको मैंने रेडी करना है। तो मुझे ऐसा लगता है कि सर जो मैच्योर है, जैसे कई सारे दिग्गजों ने यहाँ पे बताया कि अगर किसी भी आपदा में अगर वो काम करने के लिए रेडी है, अगर उसकी मेंटेलिटी है कि किसी को मदद करनी है, तो एज इज नॉट फैक्टर। उसकी जो उम्र है वो मायने रखती नहीं है। I think we lost the connection. Yes, yes. I think this connection is very deep. Is joining and joining. जी, आपको आवाज आ रही है? Meanwhile, I request everyone else, if you have any questions to our speakers, you can put in the chat. So once Mr. Millen completes his session, we can directly go to the speakers. You know, if you have any query, just put in the chat box, and we will take it in the end. Millen ji? मिलन जी, आपको आवाज आ रही है? हाँ सर, मुझे आवाज आ रही है सर आपकी। आपका नेटवर्क बार आप मीटिंग से बाहर हो रहे हैं। हाँ सर, यहाँ पे नेटवर्क का थोड़ा सा इश्यू है सर। ठीक है सर, मैं कंटिन्यू कर सकता हूँ? जी 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 सर। तो सर हमारा जो वार्डन है, तो वार्डन के पास में सारी इंफॉर्मेशन आ जाती है। इसके पीछे का सबसे मेन जो रीजन है सर कि एक लोकल पर्सन है। और जनरली अगर हम लोग इस वार्डन को जब हमारे ऑर्गेनाइजेशन में लेते हैं तो उसके लिए जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है सर, खाली 4th पास होना चाहिए। यानी उसके लिए कोई ऐसा स्टैंडर्ड एजुकेशन है भाई एसएससी का होना चाहिए, एचएससी होना चाहिए, वो भारत का नागरिक होना चाहिए, और वो उसकी शारीरिक और बौद्धिक क्षमता वो अच्छी होनी चाहिए। बस सर इतने ही कंडीशन है। तो नेचुरली मुझे इतना ही बताना है कि अगर हम बिल्कुल समाज के बिल्कुल दुर्बल जो घटक है, यहाँ से लेके बिल्कुल डॉक्टर्स, इंजीनियर, ऐसे जो बड़े लोग हैं, उनके साथ में अगर प्रॉपरली अगर कोऑर्डिनेशन करके अगर इस इंफॉर्मेशन को सर हम अगर आगे लेके जाएंगे, या तो ये इंफॉर्मेशन को एक दूसरे को शेयर करेंगे, तो हो सकता है कि हमारा इंफॉर्मेशन है फास्ट ही हो जाए।
फॉर एग्जाम्पल अगर मैं एक सर एग्जाम्पल दूंगा हमारे मुंबई का। हमारे मुंबई के 4 एरिया हमने बना के रखे, 4 पार्ट में मुंबई को डिवाइड किया है। तो किसी भी गलियारे का एक भी अगर वॉलंटियर है और उसके वहां पे कोई भी इंसिडेंट या तो कोई भी छोटा मोटा अगर कोई हादसा हो जाता है तो डायरेक्टली वो हमारे कंट्रोल सेंटर में ये करता है, कॉल करता है, और वहां से हम लोग को इंफॉर्मेशन मिलते हैं और उसके बाद में हमारे जो डेपोज होते हैं वहां से उसको सर्विसेज प्रोवाइड की जाती है। तो नेचुरली इसी प्रकार से हम अगर ऐसे लोगों को तैयार करेंगे, इस तरीके से हम लोग ट्रेनिंग देंगे, तो हो सकता है कि हमारा जो एम है इंफॉर्मेशन का, जो ज्यादा से ज्यादा हम लोग एक्सेस कर सकते हैं, तो वो हमारा वो सफल हो सकता है। और सर बाकी जो स्किल डेवलपमेंट के लिए भी हम एक टिपिकल ऑर्गेनाइजेशन से हम लोग कोऑर्डिनेशन करके छोटे छोटे कैप्सूल कोर्स बना के, स्किल डेवलपमेंट एंड सिविल डिफेंस ऐसे कोर्स बना के हम लोग अगले साल तक उसको भी लॉन्च करने की कोशिश कर रहे हैं। उसके बावजूद सर पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा डिजास्टर मैनेजमेंट का ये भी सिविल डिफेंस ने चालू किया है। तो कई सारे ऐसे जो प्रावधान हैं जो फ्यूचर में इन यूथ के लिए, इन वॉलंटियर्स के लिए काम में आ सकते हैं, इसके ऊपर ये ऑर्गेनाइजेशन काम कर रही है। इसके बाद में सर ये है कि पूरे महाराष्ट्र में, महाराष्ट्र के हर एक डिस्ट्रिक्ट में सिविल डिफेंस को एक्टिवेट करने का जो अगला जो टास्क है, वो टास्क पूरा करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारे डीजी साहब कर रहे हैं। और हो सकता है कि अगले कुछ सालों में ये सारी चीजें सक्सेसफुली, माने महाराष्ट्र के हर एक डिस्ट्रिक्ट में सिविल डिफेंस आपको परिचित हो। तो नेचुरली इसके लिए ये बाकी के एनजीओ वगैरह है जो, उनका सपोर्ट हमको जरूरी है। अभी कुछ दिन के बाद में हम लोग यूएनडीपी से मिलके एक मॉक ड्रिल भी अरेंज करने जा रहे हैं। महाराष्ट्र के 34 डिस्ट्रिक्ट में हम लोग इस मॉक ड्रिल को एक तरह से हम लोग ये स्टार्ट कर रहे हैं। अभी उसी की हमारी तैयारी चालू है। तो मुझे पता है कि मैं ज्यादा आपके साथ में पॉइंट बाय पॉइंट ये नहीं कर रहा, बट मुझे ऐसा लगता है सर, मैं एक ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट में काम करने वाला आदमी हूँ और कई सारी चीजें मैं प्रैक्टिकल ओरिएंटेड में भरोसा करता हूँ। तो प्रैक्टिकल ओरिएंटेड माने लोगों को ट्रेन करना। और किसी भी विपदा में अगर कोई व्यक्ति अगर इंजोर है, अगर कोई हादसा हो गया फायर के जैसा, तो उस वक्त में हमें क्या करना है। अगर किसी जगह में फ्लड आता है तो हम उस जगह में क्या कर सकते हैं। तो ऐसी छोटी मोटी चीजें हम सिखाते हैं सर। और ये ही जो ट्रेनिंग है वो आप अगर हर आम लोगों के हमारे जरिए से अगर लोगों के पास में पहुंचे, बिल्कुल एक जनरल लोगों के पास में पहुंचे, तो अच्छी तरीके से ये हम लोग इस नॉलेज को यूटिलाइज कर सकते हैं और हमारे समाज को हम लोग अच्छी तरीके से एजुकेट कर सकते हैं। ये बहुत एक कल्चर बनना चाहिए। डिजास्टर मैनेजमेंट का जो है वो एक तरह का कल्चर बनना चाहिए। लोगों की मदद कैसे करें, एक कल्चर होना आवश्यक है। उसके बाद में सर काफी सारे इंडस्ट्री से भी हमारा कोऑर्डिनेशन है। हम लोग इंडस्ट्री के लिए भी काम करते हैं। इंडस्ट्री में हमारा इस तरीके से रोल है कि हम किसी भी इंडस्ट्री को अगर ट्रेन करते हैं या तो वहाँ पे ट्रेनिंग देते हैं, तो हमारी वहाँ पे एक माने एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि इमरजेंसी में अगर कहीं पे कॉल देते हैं आपको, तो आपको हमारी मदद के लिए आना है। और अगर आपके इंडस्ट्री में या तो आपके प्रीमाइसेस में अगर कोई अगर आपदा होती है, तो नेचुरली उसको आप खुद हैंडल करेंगे क्योंकि आप ट्रेन हो। तो इस तरीके से भी हम लोग जितना हो सके उतना अच्छी तरीके से काम करने की कोशिश कर रहे हैं। उसके बाद में ये जो हमारे वॉलंटियर्स है या तो जिसको हम वार्डन कहते हैं, तो उनके लिए भी कुछ इंश्योरेंस के प्रावधान हमने किए हैं। उसके बाद में एक रिफ्रेशर का ट्रेनिंग भी हम लोग हर साल में उनके लिए लेते हैं। बीच के 2-3 साल में हमारे पास में कई सारे वॉलंटियर की तादाद कम हो गई थी, मगर फिर से हम लोग ने वही काम शुरू किया है। अब तकरीबन खाली मैं अगर मुंबई का अगर आपको फिगर देने जाऊंगा तो तकरीबन 8 से 9 हजार वॉलंटियर हमने मुंबई में तैयार किए। तो हमारा काम चालू है। अगर किसी को कोई सवाल है तो पूछ सकते हैं।
थैंक यू मिलन जी। जो एक मुख्य बात आपने अपने बहुत ही ब्रीफ सेशन में बोली या शेयरिंग में बोली कि we have to develop a culture of disaster preparedness, and I think it's very important what we are talking about and what we want to achieve. If we want to work for build a resilient India, it's very important at a different level we start working on the culture of preparedness. सर सॉरी एक चीज मैं आपको मैंने जितने भी मान्यवर है उनको बताना चाहूंगा कि सर डिफेंस वाला अगर 50 का भी हो या तो 60 का भी हो तो जवान ही बोलते हैं सर। तो जनरली ये जो यूथ का डेफिनेशन है, तो टिपिकल कोई 18 या 20 वाला कोई कॉलेज कुमार नहीं होना चाहिए। तो जो भी इस काम में, क्योंकि हमारे वॉलंटियर सर ऐसे है कि बिल्कुल उम्र के 82 ईयर तक भी हमारे वॉलंटियर्स काम कर रहे थे। तो बस मुझे ये मैसेज देना है कि आप कोई भी ऐसा उम्र का दायरा मत रखिए कि ठीक है आज के एडवांस जो जनरेशन है उसमें डिजिटल लिटरेसी ज्यादा है, उसमें कोई दो राय नहीं है सर। बस वो उनके नॉलेज को हमको यूटिलाइज करना है। बट जो जवान है उनका डेफिनेशन थोड़ा हमको इस तरीके से रहना चाहिए कि वहाँ पे एज फैक्टर नहीं होना चाहिए। थैंक यू वेरी मच। Thank you, Milanji. I'm really sorry we are running late, so I will really appreciate if we can take maximum 1 or 2 questions, not more than that. So if you have questions, there's only one questions in the chat box for Professor Amrita. The question is, how many universities have included disaster management as a part of their as a part of their syllabus? Yeah, that's the only question till now. To be very honest, Nitish, I don't have the idea about exact number of universities who have the disaster management in their curriculum. But I can mention a few who have, like IGNOU, we all know that has always been offering both the 1-year certificate program, PG diploma in disaster management, as well as a master's degree program in disaster management. It is a 2-year degree program. Other than that, Jamia Millia has that, Tata Institute has been offering, and there are many others. But of course, as a follow-up to the model curriculum coming in, I guess there are more and more educational institutions that will fall into the line and offer the education in the domain of disaster risk reduction and management. But thank you so much for the question. Yes, ma'am. Yeah, thought I will just support Amrita. IGNOU and Gorakhpur University was one of the, and the civil defense in were some people who were doing it. Tata Social Sciences Institute is another one, which is a very, very recognized and all over. And now a lot of the state governments have also asked it, but maybe many of the institutes have it in different ways, not necessarily as a full-fledged disaster management course, but they could have electives and small credit courses across on specifically. The earthquake science engineering in IIT Roorkee is very old one. It started very long back. And then Kanpur also has something on water management. So there are, and Mumbai University has, and their engineering courses has a lot of these things. So it is not just that, the idea behind, I think, the whole Prime Minister's discourse was that disaster information about disaster management should be ingrained in each and every human being, every citizen of it. That's one of the, and specifically youth could play a very major role. This session was also about the role of NGOs. Somewhere we missed out that. One thing what I would like to say is the civil society organization have always been a part and parcel of the disaster management, and their roles is as similar. They play a role in each of the phases of disaster management, which is contiguous and it is always there. So an education institution, educational run NGO would be working with the children, and
were talking about school safety plans and school safety plans, mock drills for the children, and a lot of school related activities. Agricultural, an organization working on agriculture would talk about how to make agriculture disaster resilient, and also how to recover back faster. So alternate, differential types of varieties of agriculture produces and other things which would need required to be put in. A person working on infrastructure, specifically housing, would talk about resilient housing and work towards it. Like one of the organization is Seeds, which works on disaster resilience housing, or Hunar Shala in Gujarat, or even Taru for that. A lot of they also do a lot of research, trainings, and other things. So an NGO is something a holistically different entity within the, when we talk as part of as compared to the youth. So youth may have a individual role, while NGOs have a holistic and how would you say now, organizational role. So I would suggest, Sphere, you are also an organization. So maybe when we want to talk about role of NGOs, maybe can we have a different session than what we have talked about today, in more in terms of youth, specifically related to civil defense, NYKS, and civil defense is one of the institutes which has been having a lot of volunteers. Initially, they were more urban centric, but as the Disaster Management Act came in being, there changes in their own laws, this has really spread, and I think they are playing tremendous and major roles. And they are outside the academic institutions, so they are another group of trained volunteers. We talked about Army, but Army does play a role, but as a disciplined organization, they play a major role. In the similar way, the civil defense also plays a major role in that. Thank you, ma'am. I think we can, it's really nice to have you all, and we can go on, continue discussion on this. There's yes, ma'am. Oh, sorry. I think there is some Godfrey wanted to say something. He's very he wants to share some. I texted him, but I'm not sure. Okay. It's okay. Give him 2 minutes. Okay. Yes. Sure. We can always overshot the time. Okay. I'm so sorry to interrupt the session, because I believe, if we don't discuss, we don't put our viewpoints, it doesn't help, Yes. I had 2-3 points in mind, One, when we speak, I totally agree with Amrita ma'am. I was not asking about the university which have specific course for disaster management, but my aim was, why not at school level? Why not at college level? We have a 2-hour session for disaster management, okay, wherein the students are taught, okay, because we are into developing the national policy for youth. Why don't we include in that the disaster management segment, if we really want to work at community level, okay? So that was my viewpoint, and I really agree with Civil Defense sir and Milan sir and sir from NSS, because NSS has a compulsory camp for disaster management, which at least अगर कोई disaster होता है, उनको basic techniques तो पता रहते हैं. So why it's not happening at school level as well as college level? And when we see the role of NGO plays a very important role. I'll share 1 or 2 examples wherein we have done a community training program. आपको पता होगा मुंबई में जब बम ब्लास्ट हुई थी, okay, so that was the time we were discussing कि करना क्या. Then we designed a program for the local stall वाले जो होते हैं ना, street food वगैरह लगाते. So we trained them into basic first aid and disaster management, because they were the first respondent, So these are some of the sharing the community needs to train people at different level. Okay, so that is the viewpoint I wanted to share, because since we are having a large network, sharing is very important. And if we see time, sir, I'm sorry to say,
then I don't think so we should be a part of the forum. I'll be very open and honest to it. Sorry No. if I've hurted anyone, ma'am. No, Because if we are working to the cause, we should spend some time and open discussion from different participants for their viewpoint. usually Thank we you. have we have marked the time, but it's the sharing got delayed, and that's why we are running short of the time. Otherwise, usually Yeah. we always Yeah. have Just to respond to Godfrey, I think the CBSE has already a disaster management small module in their own courses, and many of the state governments have also included in. The unfortunate part is that we do not have something, in place for us, for each one of us to know what is happening in which part of the country. And I think as a recommendation from this today's discussion, if Sphere India could, take a little bit of, develop a small white paper on how youth are being engaged in disaster management in India in the last 20 years. And I'm sure Amrita could help in this particular for the through DMI would be very good. I think DMI and Sphere could take up a small note, which Godfrey said very well that it is important. And what is happening also, that sharing is also very important, and all of us can be a part of it to share our knowledge written up and send it to all of you to collate it and see it, put it into it. Thank you, Godfrey. I think it was very good points. Yeah. Thank you. I really appreciate your sharing your points. As you mentioned, NSS and NYKs already have the mandate for the disaster management, and they all have clubs at the school and college level. So I think it's already happening at the college and schools level. And other than that, many organizations which are working on disaster management, they also go and work with the schools to to help them in disaster planning and school disaster management plan. Because I worked with the UNICEF, so they have a mandatory the conditions for the schools to work on a school safety. So it at different levels it's happening, but at the national level we are not having like one common very concrete thing. I think that's the other thing. Okay, I think now Just one thing, Nitish, I just want to thank our ma'am for this idea, because this is really a good idea because I know, like Bihar for that matter has a very good initiative of Safe Saturday, which is there in schools. And I'm sure like that, all of the states have some or the other kind of program. So it's really a good idea. And I guess you can take lead from Spare India. You can discuss with your seniors, and accordingly that can be taken up to develop the white paper on how really different ways and means youth are being engaged in India, and that can include not just the state initiative but also the civil society, how they are engaging youth. Thanks, ma'am, for that. That's really a good idea. Yes, thank you, Professor Anvita. I will surely reach out to you to we can discuss it further. But today we come to the end. I'm really grateful to have all of you here today for this webinar. I express my gratitude to all the speakers and all the participants, to join us, and all the speakers for sharing their rich and practical experience with all of us. And also as well as the participants, to remain there and their involvement during the program. So thank you all of you. I hope to see you in future programs. Thank you very much. Thank you so much. Thank you to one and all. Thank you and have a good evening. Thank you.